they have made it. They have made it with all possible hard work what they can do and dedication. So I really appreciate that. Thank you so much. The campaign is extremely critical at a point today where people are actually not aware of a lot of things. We all live in a society where we think that we take a lot of things for granted. Being a part of it creatively, actually, it made a lot of let us put a lot of effort into this, because this campaign is needed to reach across to many people of all generations, also not only elders, even kids and babies. So making this happen creatively, honestly, when we are thinking of the creative plan for the film, we actually put ourselves into the mindset of everybody around, because it's all of us, our parents, our kids, and the situations that we face at home. That we put into the creative in the script and made this film. So this film was very easy for us to execute because it was actually a film made from our hearts. When you heard about this idea, what was your first thought? Our first thought was it is coming too late. It should have happened a lot more earlier. But nevertheless, I think she has taken an extremely amazing initiative in making this happen. In fact, we think that we should make more films like this, make people aware, send these films to schools as well, because it's important that even children watch this and are aware of this situation. I honestly believe that once you watch a film, but to make a very long-lasting impact, you have to keep viewing it multiple times. Like ma'am mentioned, when we go for cinema screenings, we have the cancer ad, we have the menstrual cycle ad. So like ma'am has requested, I think it's a great idea, and the film is very short, it's very clear, and it's very specific in what it wants to decipher and what it wants to speak. So I think it's a great film. Kudos to the whole team, and I think the message needs to be put across in the right places so we can have effective changes. That's all. So it needs to reach its right audience. Thank you. Inclusion is a subject which we normal humans deal with every day. For somebody who has a hearing repair work to be done, I can understand what it must be meaning to them when you cannot be a part of a conversation where you really want to understand, decipher what the other person is speaking. So ma'am, kudos to you and your entire team. We are highly indebted to you for being a part of such a huge cause, and thankful to people who are working towards this direction. If I could lend my support by just being here for a little bit of time, I'm always there for you, and may God give all of us great health and people like ma'am and her team who keep spreading this awareness and spread the good cause. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. समझ आया कि शायद मेरे प्रॉब्लम थी, मुझे सुनाई नहीं देता था. काश मैम उस टाइम आप ये बता देते तो मैं भी पढ़ लिख के शायद डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, लेकिन देखिए अब एक्टर बन चुका हूँ. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम, एंड आई थिंक हम लोग सब इस बात को जाने समझे और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं. आई थिंक उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए. और कई बार क्या होता है हम लोग इवेंट्स में ऐसे ही आ जाते हैं, और ऑनेस्टली मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ आपका नाम सुन के, बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, मैं सीधा पहुंच गया था. लेकिन ये देख के एक्चुअली मेरी भी आंखें खुली हैं, बिकॉज सच्ची बता रहा हूँ मेरी माँ भी ये मशीन यूज करती है, और मैं समझ सकता हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक मैं भी थोड़ा लेट हो गया था उनके लिए, क्योंकि मेरी अवेयरनेस नहीं थी. तो बहुत सारी मदर्स हैं, तो जितने भी बच्चे हैं आई थिंक अभी जाओ यार चेक करवा लो, बिकॉज मेरी माँ के लिए वो मशीन थोड़ी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो उन्हें कम सुनाई दे रहा था. लेकिन अगर सही टाइम पे पकड़ लेते तो शायद हम भी उनकी हियरिंग को बचा सकते थे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे, यंगस्टर्स, जितने एल्डर्स हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर दिस अवेयरनेस मैम. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीबॉडी. एंड हाँ, एक और मैं कहना चाहूंगा, ओल्ड मॉन्क प्रोडक्शंस यहाँ पे जो है, ओल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट्स, मेरे दोस्त जो है पार्थ एंड जोशुआ, इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करी. मैम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो नाम लूंगा, सीना चौड़ा कर दिया. थैंक यू सो मच यार. अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन अवेयरनेस वाली भी बनाई. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार ताली हो जाए. ओल्ड मॉन्क एंटरटेनमेंट्स. थैंक यू. Thank you, Manishi. I would like. Of the
deaf. In 32 years of practice, I have seen that every child can have 10 to 15% of hearing. So with the technology, we can help them to hear like near normal. And many times we have a lot of myths and misconception that hearing impairment simply hearing aid लगाया and work हो गया. ऐसे नहीं होता है. Hearing aid या cochlear implant उनकी ज़रूरियात के हिसाब से लगाना चाहिए, जिससे वो अच्छा सुन सके, और अगर अच्छा सुन सके तो अच्छा बोल सके. सो हमारी कंट्री में जो 6.3% पॉपुलेशन है जो हियरिंग इम्पेयर है, जो हियरिंग से डिटोरिएट है, और हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो, और उनको प्लेजर ऑफ हियरिंग दे सकते हैं कि तो क्यों ना दे. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द इंडियन सिटीजन that whoever you come across having hearing impairment, please help them out, give them moral support, give them a right technology and rehabilitation, and make them part of normal society. Thank you.